On the very first day of service, you were sent to a war front. A young officer, a young man, जो अभी समझ ही रहे हैं चीज़ें शायद सिस्टम की, और वो सीधा वॉर पे आप चले गए. तो हाउ वाज दैट? 18 टैंक ब्रिगेड में पहुंचे थे और दुश्मन के 100 पैटर्न टैंकों ने उनके ऊपर हमला बोल दिया. लोग कहते हैं आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, आपको उनके साथ सुलह करनी ही पड़ेगी. अरे साहब, हमने नक्शा ही बदल दिया. हमारे बैच में एक परमवीर चक्र मरणोपरांत, एक अशोक चक्र मरणोपरांत है. तो उसको बोला गया अरुण अबैंडन टैंक. तो उसने बोला माय गन इज स्टिल फायरिंग. मैंने अपने दाएं और बाएं लोग मरते देखे. मैंने देखा एक जवान की पेट में गोले का वो स्ट्रैपनल लगा और उसकी अंतड़ियां बाहर आ गईं और वो अपने हाथ से अंतड़ियां स्लिपरी हाथ से वापस डाल रहा है. इतना शॉक कि उसे दर्द नहीं हो रहा कि यार मैं इसको संभाल के रख लूं ताकि मेरे को डॉक्टर स्टिच अप कर देगा. धर्म में हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या हम मानते हैं? अरे साहब, अगर हम मानते तो क्या भारत पे 6 सदी ये फॉरेनर्स का राज रहता? एक के बाद एक आतताई आक्रमणकारी आया, मार काट आपके मंदिर तोड़ दिए, जला दिए, आपके शहर जला दिए, औरतों की इज्जत लूटी, मास रेप किया, ये चला गया और हम देखते रहे. एंड देयर वाज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन द जेएनयू, इंडियन आर्मी, दे रगड़ा, पिक अप अ वेपन, विल शो यू. देखे देख. You know, a flag may mean just a piece of cloth to you. I have seen people die for the damn flag. You did so much for the army, they booted you out, okay? It's a heartless organization, this, that and the rest. तू अपना रीसेटलमेंट का कर यार, नेक्स्ट जॉब का सोच, तेरे बच्चे हैं ये पालने. आज के इस एपिसोड में मेजर जनरल जीडी बख्शी सर के साथ हमने जो कॉन्वर्जेशंस की हैं वो बहुत ही पावरफुल और बहुत ही एम्पावरिंग है टू बिल्ड अ न्यू पर्सपेक्टिव अबाउट लाइफ. हमने सिर्फ वॉर स्टोरीज या पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स या फिर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के बारे में ही नहीं, बल्कि अपनी सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ डिस्कवरी और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे कॉज करें, कैसे अपने इनर वर्ल्ड को और बेहतर तरीके से समझें. हाउ डू वी टेक दैट जर्नी विद इन टू कनेक्ट विद आर डीपर इनर सेल्फ. वी हैव टॉक्ड अबाउट द आत्मन, द ब्रह्मन, द कॉस्मोस, and a lot of these deeper, insightful conversations in this episode. So watch it till the end and do share your favorite part out of this conversation in the comment box. Welcome to the Journey Within podcast with me, Shobha Rana. In this podcast, we try to navigate through the personal growth journeys of our guests. उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के थ्रू, जो लेसन्स और विजडम उन्होंने एक्वायर किए हैं, उसके थ्रू हमें समझते हैं कि अपने आप को बेहतर कैसे समझें, सेल्फ डिस्कवरी कैसे करें और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कैसे करें into a better life. I'm extremely delighted and at the same time humbled to have my today's guest in the studios. He is somebody whose journey has been truly inspiring. He has spent 37 years in the Indian Army, and most of this time he was at the war front, leading like a leader and making us win these powerful wars. He is former GOC of the Romeo Forces. Please welcome Major General G.D. Bakshi at the Journey Within podcast. Hi. Good evening, sir. Hi. I am extremely happy and excited about this conversation, and there are many reasons to be so. A, you are a decorated army officer. B, you have led us and have fought and have made us victorious in so many wars. You have such a beautiful, you've lived such a full life that is full of interesting stories and inspiring stories. और आपकी कहानी के through, this is what I want to sort of give to the listeners of this podcast, that how can we lead by example and how do we create our best lives, not just for ourselves, बाकी जितने भी लोगों को हम impact कर सकते हैं, कैसे positively uplift कर सकते हैं. सबसे पहले conversation I want to do about your first day of service. बहुत सारे लोग commission होके आते हैं, लेकिन उनकी first day of service बहुत different होती है जो आपकी थी उससे. On the very first day of service, you were sent to a war front. A young officer, a young man, जो अभी समझ ही रहे हैं चीज़ें शायद सिस्टम की, और वो सीधा वॉर पे आप चले गए. तो हाउ वाज दैट? हम लोगों को 14 दिसंबर 1971 को कमीशन मिलनी थी, लेकिन हमें 14 नवंबर यानी कि 1 महीना पहले कमीशन दे दी गई ताकि हम लोग युद्ध में हिस्सा ले सकें, ताकि युद्ध में कैनन फॉडर, तोपों को चारे की जरूरत होती है, उसके लिए यंग मैन की जरूरत होती है. तो हमें चुना गया, हमें भेजा गया. मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने सर्विस के पहली रात हम में से ज्यादातर जो मेरे बैच के थे, हम युद्ध में थे.
We were on the battlefield and some of them were into battle. और युद्ध की पहली रात ही हमारे कई सारे मेरे कई साथी बेचारे शहीद हो गए, किसी की टांग गई, किसी के हाथ उड़ा, और उनके माँ बाप को उनकी पहली पेंशन मिल गई, इसके पहले कि उनकी पहली तनख्वाह मिलती। लेकिन इतने कुर्बानी हमारे बैच ने दी, हाँ? लेकिन हमें बड़ा फख्र है इस बात का कि हमारा वो बैच है जो कि कटिंग एज पे था, सबसे आगे था। जो है, हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे 1971 के युद्ध में, और हमने केवल मात्र 13 दिन के अंदर 550 किलोमीटर 3 तरफ से हम बांग्लादेश में घुसे थे, और बांग्लादेश की यानी तत्कालीन ईस्ट पाकिस्तान की राजधानी ढाका पर हमने तिरंगा झंडा फहराया था। 93,000 पाकिस्तानी कैदियों ने, सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। एंड वी हैड क्रिएटेड अ न्यू नेशन स्टेट विद द फोर्स ऑफ आर्म्स। लोग कहते हैं आप अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, आपको उनके साथ सुलह करनी ही पड़ेगी। अरे साहब, हमने नक्शा ही बदल दिया। वी चेंज द मैप ऑफ साउथ एशिया। So we are very proud of that fact. We are also very proud of the fact, बड़ा फख्र है हमको इस बात का कि हमारे बैच में एक परमवीर चक्र मरणोपरांत और एक अशोक चक्र मरणोपरांत है, जो कि सबसे बड़े गैलेंट्री अवार्ड्स जो कि हैं। हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड्स हैं भारत वर्ष में। और मैं बताना चाहता हूं कि एक उनमें से थे सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल परमवीर चक्र, जो कि मात्र 21 वर्ष की आयु पे, ही इज द यंगेस्ट परमवीर चक्र, मात्र 21 वर्ष की आयु पे उसने शहादत अपनी कुर्बानी दे दी थी। बसंतर के फ्रंट पे, वेस्टर्न फ्रंट में वो लड़ रहा था। दुश्मन के हमारे 18 टैंक ब्रिगेड में पहुंचे थे, और दुश्मन के 100 पैटर्न टैंकों ने उनके ऊपर हमला बोल दिया, जबरदस्त हमला बोल दिया कि कुचल देंगे 18 टैंक क्या है 100 के सामने। और इन्होंने टोटल कोई 48 से ज्यादा दुश्मन के टैंक ठोक दिए। वो पूना हॉर्स रेजिमेंट, जो कि सबसे, जिसे फख्र हिंद कहा जाता है इंडियन आर्मी का, कि मतलब प्राइड ऑफ इंडिया, और पाकिस्तान ने ये नाम दिया। सबसे जानने की बात कि हम अपने आप को नहीं दिया, पाकिस्तान ने फख्र हिंद बोला है पूना हॉर्स को। तो अकेले अरुण खेत्रपाल ने 5 दुश्मन के टैंक बर्बाद किए। उसके टैंक में आग लग गई, उसको गोला लगा था। उसको बोला गया, अरुण इवैक्यूएट टैंक, उतर जाओ, निकल जाओ टैंक से। टैंक के अंदर 40 गोले होते हैं, अगर वो फटना शुरू हुए तो आपके चीथड़े नहीं मिलेंगे। ठीक है साहब। तो उसको बोला गया, जब उसने 3 दुश्मन के टैंक डिस्ट्रॉय कर लिए थे, उसके टैंक को आग लग गई, तो उसको बोला गया, अरुण अरुण अबैंडन टैंक। तो उसने बोला, माय गन इज स्टिल फायरिंग, आई विल नॉट abandon tank, I will get these bastards, was the exact words that he used before dying. और उसने 2 और दुश्मन के टैंक बर्बाद किए, दुश्मन का हमला विफल कर दिया, और तब उसको जाके आखिरी में जब गोला लगा तो वो बेचारा शहीद हो गया। सर, आई एम गेटिंग गूज बम्स लिसनिंग टू दीज स्टोरीज, क्योंकि ये सारी बातें और ये सारी कहानियाँ अब थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू हमें पता चलने लगी हैं। जब हम बड़े हो रहे थे तब ये सब कहानियाँ नहीं थी नहीं, हमारे सामने, बिल्कुल नहीं। ये सब रोल मॉडल्स नहीं थे, है ना। हम सिर्फ एक क्रिकेट और एक बॉलीवुड और उस तरह के ही फील्ड से अपने रोल मॉडल्स को चुना करते थे। बट आपके जैसे जो रोल मॉडल्स हैं, जिन्होंने एक्चुअली वॉर फ्रंट्स में इतना बेहतरीन, इतना शानदार और कमाल का काम किया है, एंड हैज़ लेड इंडिया इनटू सो मेनी ब्यूटीफुल विक्ट्रीज। आपने एक ना लाइफ को फुल सर्कल देखा है। आप बात कर रहे हो आपके बैचमेट्स की, जिनके साथ आपने गेम्स खेले, ट्रेनिंग किया, खाया पिया, उनको आपने अपनी आंखों के सामने, यू सॉ ऑल ऑफ दिस हैपनिंग टू देम। तो सर, हाउ हाउ वाज इट इमोशनली एंड मेंटली फॉर यू टू टेक इट? देखिए, रोजर पिनियाओ, ही इज द मेरीन कोर हिस्टोरियन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर फॉर द अमेरिकन्स। और उसने अपनी किताब में एक बड़ा सुंदर वाक्य लिखा है, जो हर कोई जो योद्धा जो लड़ाई में जा चुका है, ही विल अंडरस्टैंड, एकदम से वो उसके साथ कनेक्ट करेगा, दैट करेज इज अ सरप्राइजिंगली कॉमन ह्यूमन क्वालिटी। बहादुरी, हम सोचते हैं कि एक अजूबा होता है, एक हजारों में एक बड़ा बहादुर निकलता है और बाकी सब डर जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। The one of the greatest truths that you learn on the battlefield is that courage is a surprisingly common human quality.
बहादुरी आपके ऊपर भी मुसीबत आन पड़े, सडनली द मेटल इन यू विल कम अप। और खासतर आपकी अगर एथनिसिटी वहां की है, लड़ाका जगह की, जैसे आप उत्तराखंड से हैं, कोई राजपुताना से, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा, यहाँ तो लड़ाके बेसिकली हैं। तो मैंने बहुत कम डरने वाले देखे हैं लड़ाई के मैदान। द थिंग इज यू मे बी स्कैर्ड एज हेल, यू कांट शो इट बिकॉज यू आर लीडिंग मैन। वो आपके चेहरा देख रहे हैं, और वो आपका चेहरा अगर उड़ता, हवाइयाँ उड़ती देखें, तो वो मोराल तो आधा वहीं पस्त हो जाता है। और लीडरशिप का एक ही तरीका है हमारी सेना में, भारतीय फौज में, देयर इज ओनली वन वे टू लीड। उसका लिए दो शब्द हैं, फॉलो मी, मेरे पीछे मूव। जब मैं हमले करने जा रहा हूं, सबसे आगे अफसर होगा। इन एक्चुअल प्रैक्टिस इट इज एज सिंपल एज दैट, फॉलो मी, मेरे पीछे मूव। और हमारा जो नुस्खा था, जो मैं अपनी पलटन में बोला करता था, वो था गब्बर सिंह का नुस्खा, जो डर गया सो मर सो गया। मर गया। बड़ी अजीब बात है कि लड़ाई में गोली वहीं जाती है जहां डर है। सर वो इमोशन भी दोनों तरफ आपको लेके जा सकता है कि मैं नहीं बचने वाला। एक तो ये हो सकता है कि अब मैं नहीं बचने वाला हूँ तो लेट मी गिव माय बेस्ट हियर, और दूसरा ये होता है कि अब मैं बचने ही नहीं वाला हूँ तो मेरे हाथ पैर फूल गए हैं और मैं बस सरेंडर या छोड़ रहा हूँ इस चीज़ को इस मोमेंट पे। This, वो दोनों तरफ ऑसिलेट हो सकता है वो the इमोशन। second half I have not seen in the Indian या army, but the first half I have seen plenty. Von Clausewitz, द ग्रेटेस्ट राइटर ऑन वॉर, जो बहुत मशहूर लेखक है जर्मन, वो ही सेज करेज इज ऑफ टू टाइप्स। हिम्मत दो किस्म की होती है, एक होती है द बर्स्ट काइंड, और दूसरी होती है कोल्ड करेज। बर्स्ट काइंड ये है कि हम आगे जा रहे थे, गोलाबारी हो रही थी, मशीन गन का फायर सामने से आ रहा था, मेरा एक साथी गया, दूसरा गया, तीसरा गया, देन माय बेस्ट फ्रेंड मेरी आंखों के सामने वो धाड़ उसको लगी और वो थरथरा के वहां पे गिर के मर गया। और मैं उसको शेक कर रहा हूँ, फिर मेरे को इतना गुस्सा आया कि मैं आपा आपे से बाहर हो गया। आई गेट यू करके मैंने कई बार देखा। और वो चार्ज करते हुए जाता है, उसे समझ नहीं आता उसने किया क्या, लेकिन जब होश आती तो देखा मैंने तो 8-9 दुश्मन मार डाले और फतेह कर ली। इसको कहते हैं बर्स्ट काइंड ऑफ करेज। ये बहुत अच्छी है, इट कैन अचीव मच, ये वॉन क्लॉजविट्स कहते हैं, बट इट कैनॉट बी रिलाइड अपॉन टू सरफेस एट द राइट टाइम राइट प्लेस। राइट, अब आपको कैसे मालूम कि उसका बेस्ट फ्रेंड मरेगा? करेक्ट, आप उसके बेस्ट फ्रेंड को थोड़ी ना मारोगे उसको करेक्ट। मतलब उकसाने इट के लिए। इट डिपेंड्स ऑन द ट्रिगर, इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांस। सर्कमस्टांस। It is circumstantial. The other courage is the cold kind. There are people, and I have seen plenty, who hold life cheap. इंट्रिंसिकली फिगर नहीं है, वो ज्यादा तीखता चिल्लाता नहीं है, कुछ नहीं करता, बट ही इज द क्वाइटेस्ट चैप। बट सबसे आगे लड़ाई में आप उसको जाते देखोगे, बार बार वही आदमी सबसे आगे होगा। ही होल्ड्स लाइफ चीप एंड ही इज कोल्ड करेज, ये ज्यादा रिलायबल होती है। इट मे नॉट अचीव एज मच एज बर्स्ट करेज, बट कोल्ड करेज अचीव्स अ लॉट। तो देखिए, ये जो आपने सवाल पूछा है, ये दार्शनिक है, बहुत फिलोसॉफिकल सवाल है। बहुत सारी चीज़ें फिलोसॉफिकल लेवल पे, टेक्सचुअल लेवल पे, कॉन्सेप्चुअल लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन एक्सपीरियंशियल लेवल तक आने में क्या वो चीज़ें उसी तरह से ट्रांसलेट होती है, वो एक्चुअल मुझे लगता है परख है आपके मेरिट की। उसकी कसौटी कौन सी है? धर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र। धर्म का क्षेत्र युद्ध का क्षेत्र है। धर्म में हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्या हम मानते हैं? अरे साहब, अगर हम मानते तो क्या भारत पे 6 सदी ये फॉरेनर्स का राज रहता? एक के बाद एक आता ताई आक्रमणकारी आया, मार काट, आपके मंदिर तोड़ दिए, जला दिए, आपके शहर जला दिए, औरतों की इज्जत लूटी, मास रेप किया, ये चला गया, और हम देखते रहे। सर वो जो 2 टाइप की करेज आपने डिफाइन की, वो दोनों में से कोई भी एक करेज उस वक़्त पे शायद काम नहीं कर रही थी। नहीं कर रही थी क्योंकि आपसी फूट बहुत थी, आपस में लड़ मर रहे थे। ये तो हमारी खसूसियत रही है, हम आपस में ज्यादा लड़ते मरते हैं। कोई हिंदुस्तानी अपने को दूसरे हिंदुस्तानी से कम नहीं समझता, अच्छी बात है, बट इट कांट बी कैरिड बियॉन्ड अ पॉइंट कि आप लड़ते झगड़ते रहे, दुश्मन गेट पे है। लाइफ में जब हम एक बैटल फील्ड में आते हैं, अपने इंडिविजुअल बैटल फील्ड में, तो यही 2 चीज़ें हमारे साथ होती है। या तो हम करेज दिखा के उसको क्रॉस करने की हिम्मत रखते हैं, या तो फिर वहीं पे हमारे हाथ-पैर फूल जाते हैं और हिम्मत टूट जाती है। लेकिन हमारे इंडिविजुअल लाइफ्स में जो वॉर है ना, हम सारे लोग कहीं न कहीं उनमें रोज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पार्टेक कर रहे हैं, और कहीं न कहीं हम ये एग्ज़िबिट नहीं कर पा रहे हैं एज़ आवर प्राइम क्वालिटीज़। सो व्हाट आर योर इनसाइट्स एंड टिप्स एंड लेसन्स दैट यू कैन शेयर हियर? I have very
essential life lessons to share here. देखिए, मैदान जंग में हमें जो हमने सीखा है कि जो डर गया सो मर गया, हिम्मत मर्द मदद खुदा। ठीक है साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने ये मेरे लिए थ्योरी नहीं है, मैंने अपने दाएं और बाएं लोग मरते देखे। मैंने देखा एक जवान की पेट में गोले का वो स्ट्रैपनल लगा और उसकी अंतड़ियां बाहर आ गई और वो अपने हाथ से अंतड़ियां स्लिपरी, इंटेस्टाइन 21 फीट छोटी इंटेस्टाइन, 6 फीट लॉन्ग लॉन्ग इंटेस्टाइन को वो इंटेस्टाइन। हाथ से वापस डाल रहा है। इतना शॉक्ड कि उसे दर्द नहीं हो रहा कि यार मैं इसको संभाल के रख लूं ताकि मेरे को डॉक्टर स्टिच अप कर देगा। मैंने बेटा पानी पिलाया है लड़कों को आखिरी वक्त जब वो दम तोड़ रहे थे। पानी पानी, मैं थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको लाइफ लेसन्स दे रहा हूं फ्रॉम द बैटल फील्ड। और लाइफ लेसन ये है कि फियरलेसनेस, ओवरकमिंग योर फियर। वेदों में एक वाक्य है, अभयम मित्राद अभयम अमित्राद, अभयम, बी फेयरलेस। हमारे जो देवी देवताएं हैं उनके एक हाथ ये मुद्रा में है। ये कौन सी मुद्रा है मालूम? अभयदान मुद्रा। मैं तुम्हें भय से मुक्त करता हूं, या देवी जी करती हैं। तो अब तुम्हें भय नहीं रहेगा, और जिसे भय नहीं वो लड़ेगा ऐसा कि मतलब दांत खट्टे कर दे जो भी सामने हो। लेकिन जीवन के हर मैदान में संघर्ष है, ना केवल फौज में, सेना में, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी में, बट आपके निजी जीवन में, बिजनेस में, स्कूल में, पढ़ाई में। You must understand the law of reversed effect. Whatever you fear the most will happen. Will happen. Because fear is a very strong emotion, it overpowers everything else and it disorganizes. Manifest also. It manifests. You see, now let me give you another example. मैंने बड़ा सीरियस एग्जाम देना है, मेरा बोर्ड एग्जाम आ गया, या मेरा आईआईटी का एग्जाम, या मेरा आईएएस का एग्जाम, बड़ा क्रिटिकल एग्जाम है, मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम बड़ा क्रिटिकल है, और मेरे को डर बैठा अगर मैं फेल हो गया तो फेल हो गया, फेल हो गया। आप जरूर फेल होंगे। वाई डू यू थिंक लाइक दैट? मैं आई अपेयर्ड फॉर माई एनडीए एग्जाम, नोबडी थॉट आई वुड पास, बिकॉज मैं बुकिश था, किताबें पढ़ता रहता था, मेरे कपड़ों पे स्याही लगी रहती थी, तो दे थॉट ये तो स्टूडियस टाइप है, ये कहाँ फौज में जाएगा। आई वॉज सेकेंड इन दी ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट अमंग लैक्स ऑफ पीपल। वाई डोंट यू थिंक आई विल बी इन द टॉपर इन द मेरिट लिस्ट? आप ये सोच के जाएं, इफ यू एम फॉर द स्टार्स एटलीस्ट यू विल रीच द ट्री टॉप्स। बट आपको डर पकड़ गया कि साहब मैं तो फेल हो जाऊं तो क्या लोग हंसेंगे, खिल्ली उड़ाएंगे, माँ बाप क्या बोलेंगे, टीचर को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो जब 24 घंटे आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो नेगेटिव तो होगा ही साहब। मैं एक और एग्जांपल देता हूं, वेरी क्रिटिकल, टू शो यू हाउ इट इज एप्लीकेबल टू एवरी फील्ड इन लाइफ। आपने बिजनेस स्टार्ट करी साहब, आपको जॉब वॉब नहीं मिली, चलो आपने कहा बिजनेस करेंगे साहब। तो आपने बिजनेस स्टार्ट करी, आपने घर से, बैंक से पैसा उधार लिया, घर गिरवी पे डाल दिया। आपकी बेचारी मम्मी ने बोला मेरा बेटा बिजनेस कर रहा है, उसने अपने गहने उतार के गिरवी रखवा दिए, ये सब करा दिया, और आपने बिजनेस चालू करी। और आपको डर क्या बैठा, हे भगवान अगर ये बिजनेस फेल हो गई तो मैं बैंक का लोन कैसे करूंगा, मेरा तो घर भी गया, मेरी माँ के जेवर गए, हे भगवान कहीं फेलियर हो गया तो मैं फेल ना हूं, फेल ना हूं। आप तो फेल होंगे साहब। आप ये क्यों नहीं सोचते कि मैं अगला अंबानी, मैं अगला अडानी? अब देखें साहब, फिर देखो, यू आर अ विनर ऑल द वे। जिसने अपना भय पे काबू कर लिया, नॉट जस्ट फॉर द बैटल फील्ड, not just for winning the Paramveer Chakra, but for everyday life. It's a life lesson. Overcome your fear. The greatest fetter is fear. Go beyond fear. Go beyond fear. या सर, फियर ट्रूली पैरालाइजेज अस, और डिसीजन मेकिंग भी वहाँ पे कंप्लीटली इम्पैक्ट हो जाती है, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में आप आ जाते हो। बट देर इज़ ऑल्सो पैरेलल थॉट हियर सर। हमें बताया जाता है, लोग कहते हैं कि आप वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करें। बहुत सारे लोग ना कहते हैं कि आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। सो क्या वो एक तरीके से नेगेटिव थिंकिंग नहीं है? You prepare for the worst with a very cold, rational mind, not with fear. You prepare for the worst as part of contingency planning. ये हुआ तो ये करेंगे, ये हुआ तो ये करेंगे, ये जैसे चेस का ग्रैंड मास्टर है, वो 10 मूव आगे सोचता है। उससे भी बड़ा ग्रैंड मास्टर है, वो 15 मूव आगे सोचेगा। तो दैट इज रैशनल प्लानिंग, दैट इज नॉट फेयर। यू हैव टू बी अ डाई हार्ड
incorrigible optimist. Never said die. What is emotional intelligence? Never give up. Sir, what can we learn from our failures and how we can use our failures to empower us? आपने इतनी सारी स्टोरीज सुनाई है जहाँ पे लोगों ने अपनी फेलियर को लेके अपने अंदर एक रिफ्यूल किया एक एनर्जी को और दुगने जोश के साथ और दुगनी तैयारी और प्रिपरेशन के साथ गए और बैटलफील्ड में विन भी किया। लेकिन आजकल हमारे साथ क्या होता है, द यूथ करंटली अगर एक या दो फेलियर मिल जाए, चाहे वो आपको लव लाइफ में है, चाहे वो आपको एग्जाम्स में है, चाहे वो आपको आपके पैशन फॉलो करने में, एक या दो बार अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप तीसरी बार कोशिश नहीं करते हैं। सो व्हाट वुड यू लाइक टू से द यूथ एंड व्हाट इज द मैसेज दैट यूड लाइक टू That गिव? is where EQ counts. EQ counts in never saying no. There is a way. And in the army, we say either we'll find a way or we will make one. Either we'll find a way or we'll make one. हम फौज में बोलते हैं कि साहब आप जब खेलते हैं स्क्वॉश, बाउंस बैक लाइक अ स्क्वॉश बॉल. स्क्वॉश बॉल को दीवार पे मारा जाता है ठाड़ करके, एंड इट बाउंसेस बैक विद एज मच फोर्स. वी शुड बी लाइक दैट स्क्वॉश बॉल. जितनी बार आपको दीवार के साथ ठोका जाए, पीटा जाए, उसी ताकत से you bounce back, you bounce back, you bounce back, and you will win. Because that persistent tenacity of purpose, willpower, ये सब टेस्टेड होती है बैटलफील्ड में. Sir, we are repeatedly talking about emotional quotient, and that is the very objective of this podcast. It's called the journey within. So, trying to connect to our inner self from where we, process these thoughts, feelings, emotions, events, and how this processing builds how we see life. Whether we have a positive outlook, negative outlook, are we courageous or not? How is fear looking to us, and all of that. Listening to all these beautiful stories that you are describing, कुछ आर्मी के stories हैं, कुछ किंगली stories हैं. इन स्टोरीज के थ्रू बहुत क्लियरली हाईलाइट हो रहा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट नीड्स टू बी टॉट टू पॉसिबली एवरीबॉडी इन दिस कंट्री सो दैट दे आर एबल टू रेगुलेट देयर इमोशंस, क्योंकि उसके इम्बैलेंस से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं. सो व्हाट वुड बी योर टॉप 3 टिप्स फॉर समवन टू रेगुलेट देयर इमोशंस? राइट. देखिए, मैं I'd like to tell you that पहले कहा जाता था when you went for any interview, ये वो, और even the army, they would test your IQ, intelligence quotient. Now the organizations are testing even more than IQ, your EQ, because they find sometimes that EQ is more than IQ. It will make up for any deficiencies in IQ, is made up by EQ, tenacity, never say die, never give in, never give up. This is an emotional quality. And now I think I'd like to transit, because I am now 74, मैं वानप्रस्थ की अवस्था में आ गया हूँ. तो मैं बेटा थोड़ा सा फ्रॉम द मिलिट्री, हमारे देश में ब्रह्म क्षात्र कहा जाता है. जो सेजेस होते थे वही वॉरियर्स बनते थे, अपने देश, अपने धर्म, अपनी जाति को बचाने के लिए. गुरु गोविंद सिंह जी संत सिपाही, महाराणा प्रताप was a संत सिपाही, छत्रपति शिवाजी महाराज was a संत सिपाही. Because you see, there are great silences on the battlefield and there are terrible noise on the battlefield. ये दो extremes आवाज की आपको मैदान जंग में मिलेंगी. मैं हिमालय पर्वत पे रहा हूँ, चोला पास पे मैंने ऑलमोस्ट 2 साल सर्विस की है वहाँ पे, और भी बड़े बड़े पासेस पे, सेला शेला, आगे जाके तावांग के ऊपर हतुंगला शतुंगला, ये मैंने बहुत हाई पासेस देखे हैं माउंटेन में. ऐसी असीम शांति है वहाँ. एंड Hindu dharma is the religion of the forest. It teaches you to be quiet. Hinduism में, सनातन धर्म में, you focus on that Atman, and you focus on अनुभव. अब आत्मन मैंने बात में तो कह दिया साहब, क्या आप इसमें बिलीव करते हैं कि नहीं करते? हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, इन द इंडिक फेथ, चाहे बुद्धिज्म हो चाहे जैनिज्म हो, दे ले एम्फोसिस ऑन अनुभव, एक्सपीरियंस. मैंने उस ब्रह्म को यहाँ फील किया, तब आप देखोगे आप बिल्कुल राइट डिसीजंस लोगे, एंड यू विल बी काम, यू विल बी द कोल्ड करेज टाइप मैन. आपको पता है ये मेरी आत्मा, ये मैं शरीर छिन्न भिन्न भी हो गया तो मैं फिर आऊंगा, अगर आना चाहूंगा, क्योंकि वो जो ब्रह्म में लीन हो गया उसके चॉइस है, देन उसका चॉइस है. उसका चॉइस है. सो मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि हम लोग अधूरी समझ, अजूनी सहभंग,
गुरु प्रताप, ये जो हम लोग जब कई बारी अधूरी समझ जब होती है तो हम वी सफर. We have to realize. And realization is just going deep within. So when I go deep within, what do I encounter? First is the tumult of thoughts. Then if I get onto a mantra or I focus on my breathing, then all thoughts reduce to one thought. And finally, I gently do away with that thought. Then I dive. You see, concentration, contemplation is what? आप पूल में स्विम कर रहे हैं, आप डीप एंड में चक्कर मारी जाए एक पॉइंट के चारों तरफ, या आप शैलो एंड में आ जाएं, वहां चक्कर मारी जाएं. दैट इज कॉन्टेम्पलेशन. कॉन्सेंट्रेशन इज मैं एक ही जगह पे स्विम कर रहा हूं, जैसे वाटर पोलो में करते हैं, अपनी पोजीशन पे स्विम कर रहा हूं. Concentration. What is meditation? I dive. When I dive, I go through the emotional mind to pure intelligence, to pure Atman, to pure Brahman. Right? So you have to experience it. The subtler levels of human mind and Have to Atman. be experienced. Anubhav, Anubhuti. This is the difference between Indian Sanatan Dharma and Abrahamic faiths or so many other Any other faiths. religions. You see, there is a book, there is a pope, there is a church. In Indian Hinduism में कोई pope नहीं, कोई church नहीं, कोई one book नहीं. You see, you are free to believe what you want to believe. Experience for yourself and believe. The Buddha said, monks, do not believe because I have said so. Do not believe because the wise men have said so. Do not believe because it is written in the sacred text. Experience for yourself and then believe. ये कौन और इंडिक फेथ से ये लैटिट्यूड देते हैं. सर जो फ़िलॉसफ़ी है, इंडियन फ़िलॉसफ़ी है या जो दर्शन की फ़िलॉसफ़ी है, उसमें बहुत सारे रूट्स बताए हुए हैं अपने डीपर लेवल पे कनेक्ट करने के लिए और डीप डाइव विदिन करने के लिए। जैसा आपने बताया कि वेदास की तरफ से एक रास्ता है, बुद्धिज़्म की तरफ से जाएँ दूसरा रास्ता है, हम न्याय की तरफ से जाएँ एक तीसरा रास्ता है, वैशेषिका फ़िलॉसफ़ी की तरफ से जाएँ एक अलग एक रास्ता है। तो बहुत सारे मल्टीपल तरीके हैं हमें अपने आत्मन से मिलने के और अपने अंदर के वो डीपर लेवल की जिसकी आप बात कर रहे हो उसको समझने के। सर हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं एंड रिसेंटली हिस्टोरिक इवेंट राम मंदिर की जो इनॉग्रेशन हुई, जो प्राण प्रतिष्ठा का इतना बड़ा समारोह हुआ। सर वर्ल्ड में बेसिकली दो बहुत बड़े रिलीजियस पावर सेंटर्स हैं अगर हम देखें, मेक्का दैट इज फॉर मुस्लिम फेथ पीपल एंड वन इज द वैटिकन, Islamic faith, and one is Vatican, that is for the Christians, right? So do you think this Ram Mandir now is going to be one of the religious power centers for Sanatan Dharmis and the believers of the faith around the world? क्या आप इस इवेंट को उस तरीके से देखते हो कि ये एक नया एक डेस्टिनेशन मिल गया है आपके अंदर के रिलीजियस इंक्लिनेशन को और पावरफुल और उसको एक फ्रुक्टिफाई करने के लिए? राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा जो हुई है वो एक सिविलाइजेशनल इवेंट है. It marks the coming to age of the Hindu faith, way of life, Sanatan Dharma, after centuries of persecution, meekness, submission. Now you have had a political consolidation of the Hindus. Now they are 80% of the Indian electorate. First Prime Minister of India felt that to promote secularism, you you have to basically splinter the Hindu faiths into castes and creeds and not let it vote as one vote bank or as one consolidated kind of a thing. And therefore Hindus must feel apologetic about their religion. They must feel shy of proclaiming it too much. But the same thing was not said of the other minority. So that was the hypocrisy. Everybody else is allowed to wear his religion on his sleeve, less me. Once while I was serving in the army, there was this debate because Ayodhya movement had started and all that. So people said this is very wrong, this is very... I said, look, I am a majority in this country. Is it my fault? Must I be, 24/7 gallowed for it? Should I have to wear a yellow badge? I'm sorry, I am a Hindu. Because I don't see any need to apologize. I don't want to hurt anybody else. I just want to practice my own faith in peace. But for 6 centuries, 8 centuries, nobody let us live in peace, you see.
That was the problem. The Indian faith says Vasudhaiva Kutumbakam. You know, the Indian faith says as many as are the paths, as many as are the faiths. To each his own. To each his own. That is why we have no Vatican. That is why we had no one single book. We have the Vedas, we have the Upanishads, we have the Aranyaks, we have the Gita, Ramayana, Mahabharata, and it still cannot hold the whole of infinity. It is infinite wisdom. How can one, thing hold it all? So the point at issue is, I don't think we will go the Vatican way because that is not the essential nature of Hinduism. What this temple is telling you, and I think I'm so happy that it has come thing, the emotional catharsis of the Indian masses has been there. But in the Indic way of life, in the Sanatan Dharma way of life, there is a universality that will always remain. This will be one of the centers of this thing and not the center. So that is the Indian faith. So I think the Ram movement was a much called for movement. It has led to Hindu political consolidation in a democracy. Now, we can be secular in the United States, but the president will still take his oath on the Bible. Well, that is the majority religion of those people. So that character will have to be reflected. Na? You can't say we will destroy Hinduism to make this secular. We must split Hinduism into hundreds of castes and jati and varna ताकि ये आपस में लड़ मर के मरते रहें और लोग जो हैं वो इतनी सी भी संख्या होगी तो राज करें. That's not true democracy. I don't think that is the right meaning of democracy or secularism. Sarva dharma sama bhava. All faiths are equal. They're all paths to the God. As you were very rightly mentioning, there are so many paths to God. In the Sanatan Dharma, there are the paths, different yogas. If you are intellectual, it is Gyan Yoga. If you are action oriented, then there is Karma Yoga. If you are emotional, there is Bhakti Yoga. If you are esoteric, there is Raj Yoga. I mean, Kundalini Yoga, Lay Yoga, Mantra Yoga. Mantra So Yoga. many, sir. I mean, as many as are the people, as are the paths to God. एक पहिया है, उसमें spokes हैं. The spokes converge on the wheel. All paths lead to one conclusion. And the Vedas में लिखा है, Vena the wise has entered the place where all things assume a single form. Let me illustrate. The sage Shaunak asked the sage Angira. ऋषि शौनक ने ऋषि अंगिरा से प्रश्न किया, भगवान वो कौन सा विज्ञान है जिसे जानकर हम सब जान सकते हैं? ऋषि अंगिरा ने कहा, वो ब्रह्म ज्ञान है, उसे जानकर हम सब जान सकते हैं. Having known which, all else is known. When you are at the center of the circle, then all the radii converge there. All the spokes of the wheel converge there. When you go on the circumference, physics is different from chemistry, is different from biology. The deeper you go into them, They're all the same. all the same. Einstein was working on a unified field theory, the theory of everything, as it is called in physics today. Because the more you go closer, पहले electricity थी, magnetism अलग थी, फिर it became one, electromagnetism. Now there are just 4 forces left: strong forces, weak forces, gravitational. And then वो बोले साहब क्वांटम मैकेनिक्स में जितना जाएं. स्ट्रेंज थिंग इज क्वांटम मैकेनिक्स आज वो कह रही है, फिजिक्स आज वो कह रही है जो हमारे ऋषि 10,000 साल पहले कह गए थे. सर वही ना, आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की जो हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं कि अगर आपको वो ब्रह्म ज्ञान हो जाता है या आत्मज्ञान हो जाता है तो हर एक चीज़ की आपको पता चल जाता है व्हाट इज़ इट. शायद तभी जो हमारे ऋषि मुनि थे इतने साल पहले, वो किसी प्लैनेट के बारे में बता सकते थे आपको, कुछ मूवमेंट के बारे में बता सकते थे, किस दिन चांद कैसी पोजीशन पे होगा वो बता सकते थे, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के और बिना किसी इसके कि आज अमावस होगी, इतने दिन बाद ये होगा या इस तरह से होगा. बेटा, जीरो किसकी डिस्कवरी है? भारत के ऋषियों की डिस्कवरी है. न्यूमरल्स 1 to 9, अरबिक न्यूमरल्स एज दे आर कॉल्ड, वो भारत से गए पहले अरब, तो फिर वो अंग्रेजों ने बोला अरबिक न्यूमरल्स है बिकॉज दे गॉट देम सेकंड हैंड. फिबोनाची सीक्वेंस कहाँ से आई? विराहांका सीरीज है from here. I mean, so much of mathematics, so much of knowledge in various fields has come from here. Lowest book, thank you. You see,
In many religions, many faiths, I mean, I don't want to say anything against any religion, but in many faiths, you have to choose between my faith or science. Either or hai sahab. I can't believe that the world started 4500 BCE, or I go by what the scientists said कि 4 billion साल पहले हो गया साहब ये वो, you know. So there are so many things. The earth goes around the sun, or the sun goes around the earth वगैरह. अब कई लोगों को तो सजा दी गई थी ये सब बताने ये के सब लिए। बताएं. So there is a dichotomy. The only religion that is future oriented, I am very proud to say, is my own, the Sanatan Dharma, the eternal faith, which has been coming down unbroken for the last 10,000 years, because this is the quantum book of Soma. I have been amazed, as have been so many scientists in the West, been amazed to find that they are both saying the same thing. The same thing. The hard problem in physics today is, what is consciousness? How do I see the red in your red dupatta or pink dupatta? How do I see the red in the hibiscus flower? Consciousness क्या है? That is called the hard problem. Easy problem is Andromeda galaxy कितनी दूर है, ये क्या है, वो क्या है, वगैरह वगैरह. But the hard problem of physics, which they are trying to crack today at the frontier of physics, is this. And for that we have quantum mechanics and so many other things. And when you read the Vedas, you find he's saying the same thing. Quantum mechanics tells you there is no observation without an observer. The basic thing is consciousness. Pragyanam Brahma. Pragyanam Brahma. And you see, what is here is everywhere. The relationship between Brahma and Atman is hologrammic. Hologram is a very interesting concept. A hologram, you know, when I was, a captain in the army, there was a DRDO thing there, and lab in Dehradun. So I took my son and we went to see the lab. So they showed us the hologram. I was very intrigued. तब hologram नए नए आए थे. So he showed me a hologram they had taken of, it's one of the Khajuraho statues with the lady is writing a letter to her lover and all that, and a very aesthetic statue. So when I take a camera picture of you, it will just record the front side of you. It can't record the back side of your head. Hologram is 360 degrees. It records the object from 360 degrees. How is it the same as the cosmic Brahman? Because the relationship is hologrammic. A hologram, every molecule contains the whole picture. जो छोटा सा ब्रह्म है, मेरा जो लिमिटेड ब्रह्म मेरे में है, जिसको कहते हैं अंगुष्ठमान अग्नि, जो मेरे हृदय में इतना है, like a flame shaped person. You see, that is the real I, and that cosmic aham brahmasmi, my God, when your perception expand, the two are the same. Greatest insight of Hinduism, and so much in tune with modern physics. And the more we go into experiential spirituality, the spirituality of Sanatan Dharma is experiential. सर ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी हुए हैं जो हम बहुत रेडीली पढ़ते भी हैं, ऐसे इलस्ट्रेशंस भी मिलते हैं दैट शिष्य आस्किंग द गुरु अबाउट द आत्मन. सर द वे व्हेन वी वर ग्रोइंग अप एंड द वे वी वर सर्व्ड रिलीजन, जिस तरह से हमने अपने घरों में प्रैक्टिस होते हुए देखा, या एक नैरेटिव, सोशल नैरेटिव ऑफ रिलीजन हमने देखा, फॉर अस इट बिकेम अ वेरी सोशल कॉन्सेप्ट अदर देन अ वेरी इंटरनल कॉन्सेप्ट विच हैड द एबिलिटी टू टेक यू टू द ब्राह्मण, टू दैट कॉन्शियसनेस. तो हम लोगों को जिस तरह से सर्व किया गया, जो हमारी लिमिटेड समझ थी, एक्सपोजर था, तो बहुत सारे मेरी जनरेशन के लोग अपने आप को बहुत प्राउडली एथियस्ट बुलाने लगे, बहुत प्राउडली ये कहने लगे आई एम नॉट रिलीजियस. एंड जब थोड़े और बड़े हुए तो स्पिरिचुअल बोलना थोड़ा कूल हो गया. सो आई एम नॉट रिलीजियस बट आई एम स्पिरिचुअल. बट ऑफ लेट आई वॉज स्पीकिंग टू अ मंक एंड ही टोल्ड मी दैट इफ यू आर स्पिरिचुअल, you are religious too. The two are inclusive, they are not exclusive. And तब से मैं इस बारे में सोच रही हूँ कि religious और spiritual कहाँ पे meet होता है, what is the intersection point. तो सर यहाँ पे आपका क्या thought है, क्योंकि I think जो अपने आप को, जैसा आपने बोला, why should I not be saying it proudly that I am a Hindu, Yeah, that's right. or That's right. accepting your religion, or being true to your religion also. Because mine is the faith that says, emphasizes experiential spirituality. Personally, my guru, I learned meditation from him. I used to go to the forest. India is a religion of the forest. I would rather that we go back to forest ashrams than build ashrams inside the cities and towns. Because our original
intuitions came from the great silence. We must learn to withdraw to the great silence. That is the Sanatan Dharma way. It's good that bulk of our people live in the cities, so we have to do things in the cities to attract them, hold them. And not everybody is at the level in which he is interested in Brahm. He is interested in the mundane level of Yeah, things. the So, materialistic things of I life. cannot destroy his faith because I have reached or possibly crossed that level of understanding. So let him do his bit. I will let him do his bit, but we must not forget. We must go back to the forests, to the great silence of the forests. Aranyak were books that were so mystic that they should be read only in the silence of the forest. The old Rishi Munis, they left the towns, they left the villages, they left the cities. They built their ashrams where? In the forests. We need to go back there. My own guru was an engineer. He was a corporate manager with a multinational firm. He was the sole heir of all the family property, including of the brothers of his fathers. You know, at the age of 27, he chucked it all and he went to a deep forest in Maharashtra between the Ajanta, the Ellora, and the Pittalkhora, Pitangalya Vihar caves. Dense forest, tiger, cheetah, snakes, you know, cobras, everything. And he meditated, built a hut, straw roofed hut, and meditated for 12 years, 12 long years. And the peace in that forest that he left around, the vegetation, vanaspatayaha shanti. Peace comes to us from the plants, tranquility comes to us from the trees. You see? And I experienced that there. I can never forget it. And my little anubhuti of Anand came there, next to my guru, in that dense forest. I couldn't repeat it in the towns and cities. So while we celebrate a lot of our achievements in the towns, our scientific achievements, etc., we must periodically go back to forest retreats if we wish to remain Indian. Whatever faith you have, go back to the silence of the forest. God speaks to us in the silence. Wisdom comes to us from the silence. Getting introduced to spirituality and experiencing this transformation for yourself firsthand is also so inspiring. I want to deep dive into that also with my next question. But most of us, maybe we will not go to the forest for a retreat or just to connect with the Atman or Brahman. शायद पता नहीं ब्राह्मण से तो हो भी पाएगा कि नहीं, बट आत्मन के साथ भी कनेक्शन करने के लिए हम लोग जाएंगे नहीं जाएंगे सर, वो एक शायद सबके लिए पॉसिबल नहीं है, या सबका अवेयरनेस लेवल भी वो नहीं है। लेकिन अपनी इंडिविजुअल लाइव्स में एवरी में क्या आप उस साइलेंस में टैप इन कर सकते हो? क्या आप अपने इनर डीपर डिमेंशन में एक अपने घर के कमरे में बैठ के जा सकते हो? वहाँ पे सर व्हाट आर योर थॉट्स? On the lighter vein, let me tell you that the army sends you to the forests and the mountains. Yes. I joined the army because I knew it would send me to the Himalayas. Your whole life is sir तपस्या एंड साधना. It is. It is. अब मैं साहब देखिए, जब मैं चोला में था तो 16,800 फीट के ऊपर वो जो सबसे आगे मोर्चा था चाइनीज के सामने, मेरे से 800 गज दूर पे चाइनीज पोस्ट था। और वहाँ पे साहब सुबह अगर साफ होता था तो दोपहर में नीचे वादियों में से बादल ऊपर आते थे। बाई 11-12 बजे तक सूप टप, यू कुड सी 2 फीट बियॉन्ड योर नोज। और वो तेज हवाएं 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर काटती थी बिल्कुल, और स्नो छह बन के आती है वहां पे, एंड फ्रॉस्ट एंड दिस थिंग। तो फिर आपके पास और कोई चारा नहीं, आप अपने बंकर में घुसो, बुखारी के सामने ठुट 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 करके बैठे रहो। और क्या करो? यू आर एन ऑफिसर। अब मैं जवानों के साथ बैठ के गप्पे शप्पे तो नहीं मार सकता, मेरे को डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। वो तो फिर भी बेचारे आपस में हंस खेल लेते थे, रो धो लेते थे, जो भी बातचीत करनी कर लेते थे। आई वाज सिटिंग अलोन। मैंने कभी ऐसे अपनी सारी उंगलियां क्रैक नहीं करी वहां। मैं एक एक करके करता था, क्योंकि एक इवेंट खत्म हो जाता था। फिर मैं अपने बैटमैन को बुलाता था, यार पता कर यार, वो लंगर में आज क्या बना है, दाल कौन सी बनी, सिर्फ दाल का पता करना और नहीं। तो वो पता करके आता था, साहब मूंग की दाल बनी है। अच्छा, सब्जी कौन सी बनी? दोबारा जाओ दोबारा ताकि ये जाओ। कोई इंटरेक्शन चलता रहे। ताकि टाइम मेरे को कुछ ना कुछ करने के टाइम पास पीपल में को थोड़ा। मैड। वहां पे इफ यू आर इक्विप्ड टू हैंडल दैट साइलेंस, यू हैव लर्नड मेडिटेशन, यू हैव डन दैट, देन इट इज अ बून। जो दूसरे को पनिशमेंट लगती है कि साहब कहाँ
फौज ने गुजार दिया, हालत खस्ता कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया. आई एम गोइंग हाफ मैड. सम पीपल स्टार्ट हिटिंग द बॉटल. They ruin themselves. So you can ruin yourself. You can also utilize that same. That the army would send me to the mountains, and I joined the infantry ताकि कोई डाउट ना रह जाए कि मुझे भेजने का मौका मिले ही मिले, मिले बार-बार मिले। बार बार मिला है साहब. मेरी आधी से ज्यादा जिंदगी ऊंचे पहाड़ों में गई है. एंड द साइलेंस ऑफ द हिमालयस. You are a warrior monk, sir. इंडिया में ट्रेडिशन है संत सिपाही. द जापानीज ऑल्सो हैव इट. Even the सामुराई, Chinese, sir, samurai, poet, warrior, adept in the fine art of poetry as he is in the art of kendo, swordsmanship, karate, jiu-jitsu, वगैरह. So it is the same person, the scholar warrior or the Indian tradition में संत सिपाही, the sage soldier, Brahma Kshatra. Brahma Kshatra. That is the tradition I belong to. My father's side I have Parshuram. Mother side I have Dronacharya. So when people tell me, why do you get so angry on television, I say, I'm sorry, blame my genes. Because they were all fighters. They were- Sir, I want to talk about this also, that your exterior appears to be a very passionate about his nation, a patriotic, a person who is very strongly, opinionated also in a lot of ways. That's your exterior. What is your interior like? What is your inner world? Because like you said, on the outer If world, there was a gap between my exterior and interior, people would see it straight away. I have to live what I practice. I mean, I have to practice what are I you like preach. this at your home also? I don't think there has been any basic change in me. I mean, it was always there. Like, was it difficult for your kids to come up to you, आप ऐसे angry, passionate, you know, It's only when I get provoked. The problem is, if a discussion is conducted, in a dispassionate, calm manner, I am calm, but I reflect the person opposite me. Because, if you provoke me, I have seen, for me, nationalism, patriotism is not something in the textbooks. It is real. it is your lived experience. I've seen soldiers die for this country, suffer horrible wounds for this country. There are no ifs and buts about it. It's there. And I feel bad. You see, we suddenly got the news that, some of our para commando boys, special forces boys, they died fighting in Kashmir. And there was a group of students in the JNU, Indian Army, de ragada, de ragada. Damn swine, pick up a weapon, we'll show you. De ragada, deke dekh. देखे देख. I mean, it gets you head up यार. सब्सिडाइज एजुकेशन करी है. मेरी बेटी ने पीएचडी करी. सबसे पहले मेरी बहन ने पीएचडी करी. आई फेल्ट इन द आर्मी, यार मैं ही एक अनपढ़ रह गया हूँ. तो रिटायरमेंट के 1 साल पहले मैंने पीएचडी शुरू करी. आई फिनिश्ड इट इन 2 years. वहां पे हजरत हैं कि जो 10-10, 12-12 साल से मोटे होके सब्सिडाइज्ड बड़ा अच्छा खाना मिलता है होटल में, हॉस्टल में. वो सब्सिडाइज खाना खा खा के वो 10 साल से पीएचडी कर रहे हैं. और क्या कर रहे हैं? इंडियन आर्मी, दे रगड़ा, दे रगड़ा. हम वो गाली गलौज कर रहे हैं. And then, they didn't want to fly the national flag there. This is an educational institution. Is it Pakistan? A flag may mean just a piece of cloth to you. I have seen people die for the damn flag. In the olden times, when a regiment took up defense somewhere, the regimental flag was put in the center. And it was the duty of every damned soldier in that battalion, regiment, that as long as he's alive, the flag couldn't fall. And the enemy would try and take that flag. Biggest trophy is the regiment का flag पकड़ दिया. Chinese flag है मेरी 4th battalion Jammu and Kashmir rifles में. Mantalai flag is called. We hang it upside down. दुश्मन का flag. But that's what a flag means. It's a piece of tattered silk to you, for people have laid down their lives for it. So when this was being discussed, I couldn't hold my feelings back. I said, look, we are not on the same wavelength. Maybe we soldiers are just bloody cursed to feel this way, but that is it. And there are no ifs and buts about it, boy. And I'm sorry, it's not a piece of theoretical lesson for me. It is lived through experience. The people who have died for it, very good soldiers, very good human beings, far better than these scum. So they said, साहब वो national flag नहीं उड़ेगा. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. मैंने क्यों भैया, ये टेरिटरी पाकिस्तान की है. नहीं, ये जेएनयू की टेरिटरी पाकिस्तान की. अच्छा, यू डोंट वांट अ नेशनल फ्लैग. वी डिसाइडेड, ex servicemen, that one of the villages in Chhatarpur, there are very nice boys who are there, youngsters.
they had made a 3,000 foot long national flag like a river. तो उन्होंने मेरे को गांव में बुलाया था, मेरे को सडनली गांव की याद आई, आज है नरेंद्र बेटा वो जरा फ्लैग लेके आओगे तुम लोग, हमने जाना है जेएनयू. So I rang up the vice chancellor. Fortunately for us, the vice chancellor was a very tough academic, Jagdish Kumar. Very few people really know much about him. He was from IIT Delhi. I thought, no nonsense educationist. And he sorted JNU out. He sorted them out, you know. You know, पढ़ाई करो, बकवास नहीं करो. सब्सिडाइज एजुकेशन दे रहे हैं, सब्सिडाइज खाना दे रहे हैं, इतनी अच्छी बिल्डिंग इमारत बनाई है, तुम पढ़ाई करो. इंडियन आर्मी दे रगड़ा, नो नेशनल फ्लैग, नो दिस नो दैट. वी टोल्ड हिम कि सर हम आना चाहते हैं आपके यूनिवर्सिटी में, वी कमिंग विद अ 3,000 फुट नेशनल फ्लैग. We understand that there are some of The students. your scholars there who don't want to have an Indian flag flying in the territory of JNU. ये तो साहब एक्सेप्टेबल नहीं है. हम 3,000 फुट का फ्लैग ले रहे हैं. अगर आपको 6 फुट बाय 4 फुट का फ्लैग नहीं चाहिए, वील गिव यू अ 3,000 फुट फ्लैग. तो मेरे को लोगों ने बोला, जीडी आई हैड रिटायर्ड. क्या तू कर रहा है, यू आर अ जनरल ऑफिसर यार. अगर तेरे पे किसी ने हाथ उठा दिया, पत्थर फेंक दिया, फौज की बेइज्जती हो जाएगी. Why are you mucking around there? You don't have weapons, you don't have anything, and you are an old man, you are going. I said, yeah, we'll go. So we called some of our retired soldiers, Jats, 6 foot 2 inch and 6 foot 3 inch, was Khalsas, and we took them along and we went. तो we said, भाई अभी तक तो हम डरे नहीं गोली और गोले से, तो अब हम पत्थरों से तो नहीं डरने वाले, या ये 2 टके के दे रगड़ा. We like to see you give us ragda, right? And we went into the JNU campus. The vice chancellor and his entire professors came to receive that flag, and they took it for 3 kilometers in the campus. We marched, and these people, ये मुट्ठी भर हैं. They have given a bad name to JNU. Not that the whole of JNU is like that. मुट्ठी भर. The rest of the students want to study, get a job, get on in life, pay back educational loans. This bloody bunch who doesn't want to finish their education, free focket का मिल रहा है, खा रहे. You forget interfering with that flag march. They climbed the palm trees on either side. खजूर वो दूर दूर से देख रहे थे because they didn't dare come close. That is how a soldier will feel. You know, when you love something, there's no because. There is no because. You see, it's just there. And fortunately, the medium is a medium which conveys emotions very transparently. You can straight away make out on television whether this guy is saying what he means or he means what he says. कथनी और करनी का फर्क टेलीविजन पे सबसे साफ दिखता है. So अच्छा शीशा है for you to see possibly yourself. I think if in a small way I have carried conviction, it is because it is here. And it is not me. It's every soldier who fights for this country. It is here. Sir, these qualities that you have, that you exhibit as your exterior, which is in complete coherence with your interior also. Yeah. जो बाहर है वो अंदर के साथ एकदम Aligned. अलाइंड है, एकदम उसी सेम जोन में है. लेकिन आजकल, और ये इसलिए हो रहा है आपके साथ बिकॉज ये आपके लिव्ड एक्सपीरियंस से आ रहा है, राइट? लेकिन आजकल Deeply lived experiences, searing experiences. You see a man dying. You see what he's saying towards the end. It's not happened to me once. It's happened several times. सर आपके ये बहुत ही डीपली लिव्ड एक्सपीरियंसेस से जो ये विजडम आ रही है, वेयर योर एक्सटीरियर एंड योर इंटीरियर आर इन कंप्लीट कोहेरेंस विद ईच अदर, है ना? आपके जैसे लोगों को देख के बहुत सारे हम लोग इंस्पिरेशन तो ले लेते हैं कि हम ऐसे हों, लेकिन हमारे पास लिव्ड एक्सपीरियंस नहीं है. एक वो फिर एक सूडो कॉन्सेप्ट बन जाता है. तो उस सूडो कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग इतने ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में पड़ जाते हैं, we don't know what we are aligned with and what we are not aligned with. So how does one come in a better alignment of themselves? Excellent What is the question. gateway to that? Excellent question. The method is laid down in our Shastras. I study the Vedas, I study the Upanishads, I study the Aranyaks. Then I think about them. I think more and more about them. Then I discuss them with friends. And then I sit down and I meditate on those things. I try and internalize them till they become me. There is no difference between the concept and me. I am the concept. Sir, you have read Vedas, you have read Upanishads, you have read so many of our scriptures. आपने बहुत अच्छे से डीपली पढ़े हैं. पढ़े के आपने किताबें भी लिखी हैं इनके ऊपर एनालिसिस करके. ठीक है? तो सर आपने इन चीज़ों को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया है, फील किया है, एंड यू हैव बिकम देम.
कोई एक ऐसा इंस्टेंस या कोई एक ऐसा थॉट शेयर कीजिए, जो जब आपको पहले पढ़ा आपने या पहले सुना, तो आपसे बिल्कुल रिजेक्ट हो गया कि ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। लेकिन जब आपने उसके ऊपर कंटेम्पलेट किया, मेडिटेट किया, तो आपको कुछ डीपर रियलाइज़ेशन हुए। डू यू हैव एनी सच मेमोरी? There is something called psychological rebound. Okay, let me explain to you what a psychological rebound is. When I was a kid, 7, 8, I had the image of the Buddha. And I used to sit there, and I remember that, we were staying in Udhampur. Udhampur is in the lower hills, and we were staying on top of a third three-storied building, Parshottam building it was called. And from there you could see the Bhadarwa mountains this way and Vaishno Devi that way and all that. And sometimes they used to wash it had a huge courtyard. They used to wash that courtyard. And in that courtyard, कई बारी वो चींटियां छोटी वाली, you could see them being swept away. And I used to feel bad. Oh, this poor little ant is dying. And I remember I had used to take straws or something and try and pick them out from there. That was me then. I was in Kargil, and the first time I saw up close and very personal, very intense combat. The artillery mortars work, 6 killed, 21 wounded in one battalion is not a small change. Strong fight. It was a strong fight. And suddenly I started seeing the corpses. And in those days, they never sent the corpses back. The CO was supposed to cremate them there. One by one, within a matter of a few months, I had to cremate 6 dead bodies of my own boys and then carry their ashes. I used to try and, whenever I went down on leave, try and go to his house and say sorry to the mom and dad. I'm sorry he died because of me, and I, I couldn't save him, and nobody blamed me, fortunately. They were within all rights to blame me for incompetence or whatever, but they did not. I suddenly felt in the battlefield a hardness of heart. It was amazing. I remember one of the first boys who got killed was Havaldar Rajesh Singh. I was very fond of him. Rajesh Singh, Rawat. You see, very brave boy and all that. And he was the air defense gunner. He had an air defense guns we were using in the ground role, which hit the aircraft and all that. They started hitting his this thing. They got a gun of a longer range than they were hitting his gun, so that he couldn't hit back. So he came out of his bunker and he took shelter under a rock. And he was feeling very amused कि ये सारा वहाँ fire कर रहे हैं, मैं यहाँ safe हूँ. He had a slight smile on his face. And suddenly one of the rounds ricocheted, hit the rock, came straight like this into his heart. And gluck, 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 the bloody blood came out, and in an instant he was dead. So his body was brought down. Now that was about 14, 15,000 feet, that bloody post. To get a boy down, you require 18 men. 6 men carry a stretcher. You have to tie him to the stretcher because the angle of descent was like this. They brought him down. It took them 16, 17 hours. वो रिलेज करते हैं एक दूसरे के साथ, थक जाते हैं, ऐसे एंगल पे ला रहे, your knee start shaking, So anyway, when they brought him in, so only he was covered till here and with blankets and everything and all, and only his face was showing, and there was a happy, peaceful smile on his face. So that I told you the way he had died. So I looked at his face. There was such a peace there that I told my doctor, he's not dead. Open him up and treat him. I want, if he's even this much chance to, save him, you bloody well do that. He said, sir, he's dead. So I said, he's not dead. So then I felt his pulse. So I said, no, I can feel the pulse. He said, sir, you are feeling your own pulse. That normally happens if you haven't been too many death wards, then you won't know this phenomena. Sometimes you think there is there. So I said, no. I said, look, I'm ordering you to open up all the bloody bandages and I want it checked. So sadly, they found the CO bullying. So sadly, they sort of started opening the bandages and all that. And then he showed me 6-inch wide hole above the heart. He said, sir, ये देखो, इसके साथ ये जिएगा. All the blood is gone. So I felt very bad. So I said, okay, but still open him up. He said, for what? He said, we'll clean him up. I'm not letting him go like that. That's not the way his family would have let him. वो बेद करते हैं, ये करते हैं. So they looked up at me, because, and
one of my youngsters who was there, he started retching. When you get the smell of a corpse, it's difficult. It's difficult. Not everybody can take it the first time when you see death and dying and dead bodies in front of you. And dead bodies of guy whom you had few days back seen and laughed and joked with. So when I found they were hesitant, so I sat down, I said, Mere ko spirit do, and I started cleaning his body myself. And the hardness of heart that I got, I didn't vomit, I didn't throw up, I didn't this thing. I thought I would have when I was a kid, possibly. Conceptually. But then circumstances change you because you are now required to be hard hearted. You can't show mercy towards Pakistan. You can't show mercies toward, 29 Baluch and 3 Northern Light Infantry. They'll kill you if they get half a bloody chance. You kill them first if you want to stay alive. It's as simple as that. The circumstances demand. Same person you suddenly find is a different personality. It happens. That is called psychological rebound. Just the exact opposite. That's a paradox. The great paradox. The great paradox. The great. He is everywhere. He is nowhere. He's the biggest. He's the smallest. This is the Yeah, Upanishads. you're the most scared, but you are also the most brave You're in the very same moment. in this That is what is the ultimate union and unison that we're talking about, sir. Of whom shall I be afraid but of another? So there is no fear in Brahman. As you go deeper, there is no less and less and less and zero fear. Sir, I was reading this one book by Osho where he said that I have no courage because I have no fear. And I instantly sort of connected with it. You don't need Osho is from my hometown, Jabalpur. Yeah. Yes, he was a professor of philosophy there Yeah. in Jabalpur. And then he took sannyas and he went to a mango orchard and meditated and came out as Bhagwan Rajneesh. Rajneesh. Some of his things are controversial, but he was very sharp. He was very sharp and very extremely well read, not only on Buddhism, Taoism, Confucianism, Chinese philosophy, and all that. So some of Oh, his very, books very well read, sir. are valuable to read. Sir, I feel wherever the greatness exists, the controversy also persists. That is the story of your life. You have lived such a great life. You also have some controversies coming to you time and again. And I think वो greatness का एक mark है. I think controversy के बिना शायद greatness. I think they're somewhere inclusive of each other शायद in more ways than one. Lighter vein, Yeah. or, to make it a little more light discussion. Yeah. There is one saying, I think it is Jonathan Swift, I think. He says, when a great man comes into this world, you can know him by this one sign. The dunces are all in league against him. So that's in the lighter vein. But, but then वो हमारे हिंदी में बोलते हैं, निंदक लागे राखिए. Yeah. When you become a colonel, brigadier, general, sometimes the ego tends to bloat. You think you're God's own thunder or whatever, this thing. That it's always very good to, one of the things is keep the photograph in your office of the youngest Jawan, the last in the rung. Because every action of yours then has, and what effect will it have on him? Then think and then pass your orders. And the other thing is that a guy who is always criticizing you, post him to your headquarters so that every day he gives you a dose that will get your ego. After retirement, it's my payback time. So when I joined the Vivekananda International Foundation, that's the leading think tank in New Delhi, right-wing think tank, and Ajit, Mr. Ajit Doval, Kirti Chakra, he was the director. He is now the National Security Advisor. I was appointed as the Deputy Director Research. I went to him, to my boss, and I asked him, sir, now that the basic infrastructure has come up, what seminars would you like? What papers and monographs have to be written? What books have to be written? What symposiums? This is what think tanks do. He said, Bakshi साहब वो सब ठीक है, but वो सब हो जाएगा. But पहले you and I will travel around this country to the remotest corners possible and speak to the children in the schools, in the colleges, in the villages, in the small countryside town, and talk to them on nationalism, patriotism, value systems of the armed forces. So that's our task.
Almost three times a month, we were on the aircraft. I have been to Arunachal, to far out places there. I have been to the run of Kutch. I have been down south. I have been in Rajasthan, Bhilwara, Chittorgarh, Haldi Ghati. वो सब जगह छोटे छोटे. I have spoken to 7 children in one little school. That's what they could manage. They would get for me and talking on this. And 3 years of this, when I came back, he asked me, "What is your feel, ground level feel of the countryside?" I said, "Sir, something is changing. कुछ करवट बदल रही है. That feeling of nationalism, assertion, Indian pride, that is Connecting back there. to the roots. Back to the roots is there." He said, "You sure?" He looked at me. He said, "You sure?" I said, "Sir, that's my gut feel. And I do think it's for the better." Sir, speaking of the change and speaking of the grassroots level reality that you've seen up close, where do you see India for 10 years from now? The 21st century belongs to India. You see a sine curve. There's a maxima, there is a minima, then the same wave must come to a maxima again. The Indian wave of the Indic civilization has hit rock bottom from 10th century to about the 19th century, rock bottom. I mean, you couldn't get lower. Particularly around 16th, 17th 16, 17, I mean, century, yes. temples were being destroyed. Nalanda, when it was put on fire, there were so many books that it burned Books for was destroyed. 6 damn months. So that was your low point. By the law of mathematics, you are bound to come up there. And you are. Today, you are the youngest population in the world. 50% of Indians are below the age of 26. 50%. You are the youngest population in the world. If we have to create an army, no country in the world can match up to us, including the Chinese. They have an aging population. Pakistan is a sinking economy. No competition to us. It may cause you problems going down. कि हम तो डूबेंगे सनम सब तुमको खोले भी ले डूबेंगे. डूबेंगे. But I'm sure we will sort it out. And even if China and Pakistan come together, we can give them a kicking. That is the confidence I have after having served 37 years in the army and seen what all is happening on our borders. We are a superpower of the future. The only thing that can drag us down is our disunity, fractiousness. We are forever quarreling with one another. So if we can overcome that and get unity and cohesion, I think the sky is the limit. Sir, you have seen a lot in your life. A lot. What is the possible antidote for fear? The possible antidote for fear is a positive emotion. Please understand, fear is a negative emotion. It is a disorganizing emotion. If you see a chap under fear, he's taught how to fire with his weapon, and if there is a stoppage, एक वो bullet फंस जाए उसकी क्या कहते हैं ट्यूब में, and his hands are shaking like this, well, I'm afraid, though he has practiced it hundreds of times, how to remove the stoppage in the darkness, he will be killed by the other chap because he is become disorganized with fear. Fear is a disorganizing emotion. No amount of reason can overcome fear. Only a positive emotion can supplant a negative emotion. And I keep saying there is nothing to fear but fear itself. Fear is the greatest fetter. You take away fear, you liberate yourself, and you can achieve miracles. Sir, coming to my last question, through the interesting stories you have shared about these battles that you have been a part of, आपने वॉर कॉम्बैट्स देखे हैं, आपने अपने फ्रेंड्स को जाते हुए देखा है, शहादत होते हुए देखी है, बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं. लाइफ में इतना कुछ देखने के बाद, what is your idea and your definition of success? Let me again go back to my roots. What does the Gita tell you about this? Gita is so clear. It is preached by a soldier to a soldier in the midst of a battlefield. So every time I have doubts, I go back to the Gita and the answers are all there. You see, he says your business is with the action and not the results thereof. Success or failure are immaterial. Success or failure come from, they are, outgrowths of the ego. I, me, myself. I want success. To somebody, success means a huge bungalow, Skoda, Mercedes, what have you,
a trophy wife, or this or that. That is somebody's definition of success. It is a very egocentric definition of success because it ties to a false level of the I, a body centric ego consciousness. The gross level. The gross level, the I, me, myself. You know, all my greed, my avarice, my lust, my this, my that. These are all contracting emotions. They make you small. If I am greedy, I have a piece of bread and you are hungry, I won't give it to you because I'm greedy. But if I self transcend, I'll give it to you and I'll feel better. You see, a man who is scared shrinks. Actually shrinks. Physically also, sir. This Physically, is what is you feel. he's trying to Yeah. present less of a target to the attacker Yeah. out of fear. If he's scared, then he will shrink. But you see a Dada in college, he may be 5 foot nothing, but his buttons are open till his navel, and he walks like this. Expansive. He expands. A self-transcending emotion, whether of courage, whether of wonder, whether of altruism, expands. And a contracting emotion is, self-assertive, self-transcending, self-assertive. Coming back to the definition of success is, you forget about success. You do your work. If it comes, well and good. If it doesn't, I couldn't give a damn. Why and how will that happen? No, very easily said, huh? Yeah, easier said than done. Easier said than done. I like painting. I'm an artist. And if that can become my job, God, I'll paint and paint and paint till I drop dead. Because nobody has to force me and watch कि इतने time पे इसने overtime किया कि नहीं किया, and the clock and get back. If I like doing something, I like fishing. I'll do it till I drop dead. I like sculpture, I like poetry, I like writing. I am passionate about aeronautical designing. Whatever you like doing, that is called your swadharma. The dharma of Agni is to burn. The whole world knows. आग को छू के देखिए साहब. You'll have to draw your hand. It's dharma, is to burn. So we all have our swadharma. I like communication. I've become fairly, I think, okay at it because I've been doing it so long. I've been an instructor in the Indian Military Academy. I've been instructor at the Staff College. I've been instructor at the National Defense Academy. So I like communication. I like reading and I love writing. I love poetry. So after I retired as a 2-star general. Fairly okay. Fine. I did my duty till the best that I could. I could have gone higher. I thought I was going higher, but people thought otherwise. And people were out to ask me, and they did, and God bless them. But I'm happy. I did what I had to do. I was given the toughest combat assignments. I turned them around. I turned defeat into victory. I have my satisfaction. And after that, one is that I'll now go to court. Why didn't you make me a corps commander? I am very deserving of army commander. I am the future chief. I'll now go to court. I'll now do this. I'll not do that. I did nothing of the sort. People said, go to court, go to. I said, "Why- for what? I've done what I had to do, and it's over. It's over. So I can keep looking at the past. वो बोले कि माथी हेरेरा खाल्टा मा पड़चू. Who says that? The Gurkhas. If you Gurkhas. keep looking up, you will fall down in a khadda. In a valley. So Yeah. don't look up. And another one of my very good generals, General Balaram. He was the commandant staff college when I was doing the staff college. He says, gentlemen, enjoy your present rank. You may not get the next, but you will have spoiled this rank also By not by giving being it. miserable Yeah. about your next one. So enjoy. If you are the battalion commander, be a tiger. Enjoy yourself, man. And tell them, sir, ये यहाँ पे मेरा हुक्म चलता है मेरी पलटन के अंदर. The way to do it is that find out मेरा स्वधर्म क्या है. What do I like doing? Try and get that as your job in life. Make your hobby your job. You will self-actualize. You will never have to be forced to work. You will pay others to let you do your work. You will be with the flow and you will enjoy. After retirement, I enjoy communication. I've been going around schools, colleges, kids,
talking to them. It's so nice because they are so spontaneous and they are so, easy to mold and they are so enthusiastic. So you feel younger. I think I have shaved off a couple of years of my life by just going and talking to the children. So do that. I write books. I've written 46 books. I just wonder, sir, looking at the books that you have written and you've brought with yourself today, and the books that I saw on the Wikipedia, the list is never ending. I just It's wonder between fighting all these battles, and it's been how many years for you to be retired? About 12, 13 I years? retired in 2008. Yeah, so nearly 14, 15 years, right? In 15 years, so much you have done and accomplished. I think it's only kind of unimaginable. I don't see them as accomplishment. I see them as enjoyment. I enjoy writing books. I work till 3 in the morning, sometimes 4. And unfortunately, wife and I are in the same bedroom. So for the poor thing to have the light on, I mean, she yells at me sometimes, and she's quite justified. But the fact of the matter is, I enjoy it. Nobody forced me to do it, but I enjoy doing it. I loved my job. I loved soldiering. That's why I chose it, and I enjoyed every moment of it. What There were I ups and downs. There were times when I was bitter, angry. But then, if you know, I I have been passed over. By the way, once in my this thing, I've been Yeah. passed over for promotion, Okay. and I was then posted home to up tera khatam your career after lieutenant colonel. After I had won the bloody battle in Kargil, there was something in my old record which was This is 99 that somebody you're had talking fixed me about. earlier. I'm talking of Yeah, 1991. 91. So I was fixed as a lieutenant colonel. No further promotion. Get lost. We don't need you. Who needs you? So I got a home posting and I said, so that let me settle, find a second job. But when I got to my home posting in my regimental center, there was so much to do. So I started working my, pants off. And I said, oh, the bloody firing standards are bad. These boys aren't on it. There was a new system of, coaching for firing so that improves. So I said, okay, I'll fire with you myself. And we'll do night firing. Most of the battles I'd seen at night, we'll do night firing. Result was I was coming back home at 1 o'clock, 2 o'clock. So one fine day, the lady told me, I thought you were passed over, boy. What are you sweating for? तू जितना भी काम कर लेगा तेरे को next promotion नहीं मिलेगी. So I was at a loss. And the other officers asked me, यार तू पागल है क्या? The army has done what it had to do to you. You did so much for the army, they booted you out, okay? It's a heartless organization, this, that and the rest. तू अपना resettlement का कर यार, next job का सोच, तेरे बच्चे हैं ये पालने. मैंने कह रहा है, why are you working so hard? You have some hope. I said, I don't know. It's not work, and then I was working, I kept slogging, there was something interesting to do, change the syllabus, change that, change that, change that. I was so involved, I never realized 1 year passed. And then we was told to make a film on General Zorawar Singh. He's one of the heroes of our regiment. And I was sitting and making a documentary film, and suddenly I got a call from my commanding officer, the brigadier. He said, "You are through, boy." I said, "What?" I didn't even put in a protest. He said, "You're through. The next board considered you, passed you up and there, and today I'm a general." So that's what I keep saying. It's easier said than done. And I'm talking from experience. If you do what you enjoy doing, you will self-actualize. Then you won't give a damn about success or failure, but how you enjoyed doing your job. Thank you so much, sir, for joining me on the Journey Within podcast and sharing so much from your pearls of wisdom, your lived experience. And I'm more than sure that this episode is going to, inspire is a very small word, but enlighten. Because we have talked so much about the enlightenment aspect of life, that's going to enlighten the people who are going to watch it. Thank you, sir, for your time. God bless you. Thank you for watching today's episode. In the comment section, please let me know your favorite part that you've enjoyed out of this conversation, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी audience को क्या पसंद आता है और एक feedback मिल सके. Do share about us with your friends and family. जितना आप ज़्यादा share करोगे, like करोगे, comment करोगे, YouTube के algos को पता चलता है कि ये जो channel है कुछ कोशिश कर रहा है कुछ अच्छा करने की और लोग उसे पसंद कर रहे हैं. So do support us so that algos support us. Thank you so much once again. I'll see you in the next episode.